Namaskar, Sat Shri Akal, Salam, hello dosto. I'm your friend Alok and once again welcome each one of you to your favorite YouTube financial education channel stockincome.in. stockincome.in पर आपका स्वागत है और ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड है हमारी रेगुलर वीकली सीरीज वीकली मार्केट आउटलुक का एंड we'll be talking about the market analysis, market projections for the week that is starting on 19th of December 2022. So I believe you've been enjoying the recent rally in the market. बहुत अच्छा रिटर्न दिया मार्केट में मार्केट ने. थोड़ा सा कुछ लोगों की ये भी कंसर्न है कि रैली ब्रॉड बेस्ड नहीं रही है रिसेंट रैली. थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स ही बढ़े हैं, इसकी वजह से इंडेक्स तो बढ़ गया, शायद बहुत पोर्टफोलियो में उतना रिटर्न नहीं आया, बट ओवरऑल पॉजिटिव ही रहा है. बात करते हैं आगे क्या होने वाला है, इसका क्या एनालिसिस है. गारंटी कोई नहीं है, बट आई एम शेयरिंग माय एनालिसिस हाउ आई लुक एट द मार्केट्स, राइट. सो एज ऑलवेज मैंने डिवाइड किया है सारे फैक्टर्स को टेक्निकल फैक्टर्स में और न्यूज एंड डेटा ड्रिवन फैक्टर्स में. तो लेट्स सी ईच वन ऑफ देम एंड उसके बेस पे हम एक अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे कि मार्केट किधर को देख रहा है, राइट. ओके, सो अगर न्यूज डेटा की बात करें और उसमें बात करें इंडाइसेस की, तो लास्ट वीक में इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव रहे हैं. निफ्टी वाज अ लिटिल मोर नेगेटिव 1.23%, बैंक निफ्टी वाज less than 1%, negative 0.95%, right. So कोई बहुत विशेष मूवमेंट तो नहीं है, right. इंटरनेशनल इंडाइसेस स्पेशली यूएस इंडाइसेस की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा हमको ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. S&P has been down by 2.1% and Nasdaq down by 2.72%. In fact, there was some small rally in the IT stocks, and Nasdaq we know is IT tech heavy index. सो कुछ पिछले वीक्स में कुछ थोड़ा सा रैली आया था इंडियन मार्केट्स में भी, बट लास्ट वीक में दैट रैली सीम्स टू फिजल्ड आउट एंड आईटी स्टॉक्स हैव फॉलन अगेन. इंडियन मार्केट में भी, यूएस मार्केट में, दैट्स व्हाई नैस्डैक इज डाउन मोर देन इवन S&P 500. सो ओवरऑल इंप्रेशन ये है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग है, ब्रेक है इंडियन मार्केट के हिसाब से. और यूएस मार्केट को देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड सीम्स टू बी कंटिन्यूइंग. यूएस मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड चल ही रहा है पहले से. एफआईआई और डीआईआई की बात करें, नेचुरल है कि दिसंबर के मंथ में एफआईआई एक्टिविटी कम हो जाती है, राइट. दिस इज हिस्टोरिकल डेटा बिकॉज टिपिकली जैसे फंड मैनेजर्स दे गो ऑन देयर एनुअल वेकेशंस, क्रिसमस टाइम आ जाता है, न्यू ईयर टाइम आ जाता है. दिस टेंडेंसी हैज रिड्यूस्ड इन लास्ट मेनी इयर्स बिकॉज ऑफ हाइटेंड कंपटीशन. अभी वो लग्जरी नहीं रहा किसी के पास की लंबी लंबी छुट्टियां लेने, एंड देन दिस रिप्लेसमेंट फॉर पीपल, लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ऑटोमेशन मोड, बट स्टिल उसका फर्क पड़ता है. तो मार्केट participation by DIs and especially FIs has been lower, but net on this week, in the week gone by, FIs have been sellers around 1833 crore and DIs have been net buyers 3462 crores. For the month also, for the month of December so far also, DIs have been buying more than 10,500 crores and FIs have been net seller to the tune of around 7,500 crore. So FIs seem to be withdrawing money out of Indian markets once again after a few months of positive inflows, right. India VIX थोड़ा सा बढ़ा है इस वीक. इनफैक्ट जो बढ़ा है वो थोड़ा सा आई वुड से इन सम वेज मिसलीडिंग भी है, बिकॉज जो बढ़ा है वो लास्ट 2 दिन में बढ़ा है. उससे पहले कंसिस्टेंटली 13 से नीचे जा रहा था और उस 2 दिन पहले तो 12 के करीब चला गया था, 12.5, 13 से भी नीचे चला गया था. तो 14 के नीचे तो रहा ही है, बट इट हैज क्लोज एट 14.07 एंड दिस इज बिकॉज लास्ट 2 डेज में मार्केट गिरा है, उसकी वजह से थोड़ा सा विक्स में इंप्रूवमेंट आई है. अल्टीमेटली विक्स ऑफ लेवल 14 इज अ रीजनेबली गुड विक्स, हिस्टोरिकल एवरेज के नजदीक है. So that shows the markets are stable, no panic, no fear, right? So let's see how things go forward. Crude oil की बात करें, हमने देखा crude oil in last many weeks has been sliding. It has been consistently in the range of around $80, right? Something $85, $86, right? And this week there has been a bit of a jump. So it is trading at now $79.42, up 3.45% from the last week, right? So but then it is likely that unlikely that crude will go up because there are fears of economic downtrend, so which will in various parts of the world. और जब economic downtrend का डर होता है, basically you are saying कि demand slow down हो जाएगा crude का. जो demand slow down होता है किसी भी चीज का, तो normally prices गिरते हैं. तो unlikely prices will shoot up in the next few days or weeks. And right now they're also at reasonable levels. In fact, larger projection is कि अभी और नीचे जा सकता है crude के levels. Okay. US Fed, some data, interest rate hike. A lot of people have been waiting for it.
स्पेकुलेशन बहुत चलता है मार्केट्स में, and ultimately they had their meeting few days back and they announced a 0.5% increase. So what is it? How do you read that? इसको अलग अलग तरह से आप पढ़ सकते हैं. 0.5% increase in interest rate basically tells you it is lesser than 0.75%, जैसा कि 3-4 बार लास्ट बढ़ाया है 0.75. So there is a bit of a slowdown of interest rate hikes, but hike है, कम तो नहीं हुआ इंटरेस्ट, पहले से 0.5% बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ. So Fed is very clear, US Fed, that they are not going to back down, they are going to fight inflation whatever it takes. Inflation की readings भी पहले से better आई हैं, so that's some consolation for the markets, right? But US Fed is giving a clear message that they will not back down till the time the inflation is within their targeted range of around 2%. And they've indicated that interest rate next year and 2024 तक भी ऊंचे ही higher ही रह सकते हैं. They've actually indicated more rises in interest rates in next few months. So that fight is on. Inflation is getting little better, इतना ऊपर नहीं रहा, but still not in the comfort zone, and Fed is very clear they would not back down. वो interest inflation को नीचे ला कर ही रहेंगे. European Commercial Bank and Bank of England they're also busy fighting inflation, and one of the key weapons remains hiking the interest rate. और उन्होंने भी अपनी last meeting में 50 basis point, which means 0.5% interest rates increase किया है to, but then that is still less than 0.75% which they had done earlier. So seems the world is fighting inflation and India is no different. India में भी inflation के against fight चल रहा है. But good news is CPI जो है Consumer Price Index, that has eased to an 11-month low of 5.88% last month. और ये बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है. इनफैक्ट कैलेंडर ईयर 2022 में फर्स्ट टाइम 6% के नीचे आई है. रिमेंबर आरबीआई का टारगेट है इन्फ्लेशन सीपीआई को 4% लेके आना ±2%. सो बेसिकली द टारगेट इज 2% to 6%, बट दे वांटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू 4%. तो 6% के नीचे आना इज अ गुड न्यूज फॉर आरबीआई फॉर ऑल ऑफ अस. और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि इसके नीचे आई है, बट दिस इज ओनली 1 month डेटा. सो 5.88% which is close to 6%. तो we cannot take it easy. But based on that, they have also not increased the interest rate. Last time RBI ने last 2-3 बार 0.5% बढ़ाया है. इस बार RBI ने फिर interest rate बढ़ाया है in the last MPC meeting, Monetary Policy Committee meeting. But they have increased lesser. They have increased by 35 basis point, which is 0.35%, right? So let's see how it goes forward. So they are seeing some meltdown on that front. IPOs आने वाले हैं 2. केफिन टेक्नोलॉजीज का IPO आने वाला है, राइट? एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर, प्राइस 347 to 366 पर शेयर का प्राइस डिसाइड हुआ है. IPO ओपनिंग डेट इज 19 December and closes on 21st of December. Do your analysis, see if you want to invest. And similarly, E-Lend Technologies का IPO भी आया है. फेस वैल्यू रिमेंबर इज नॉट 10 here, it is 5 रुपीज पर शेयर, एंड प्राइस जो ऑफर किया जा रहा है 234 to 247 पर शेयर. ये IPO 20 तारीख को खुलने वाला है, राइट? सो यू कैन वॉच आउट, डू योर एनालिसिस, मेक मनी इफ यू लाइक इट, राइट? होपफुली. ओके, सो बात करते हैं टेक्निकल्स की. ये तो देखो डेटा फैक्टर्स. टेक्निकल्स क्या कहते हैं? एंड बिफोर आई गो टू टेक्निकल्स, friends, normal standard disclaimer, this video is being shared only for educational purposes. I am not SEBI registered financial advisor. Nothing mentioned or indicated here in this video should be taken as an investment or trading advice, right? So I do this analysis for my own benefit and also share it for larger good, but I reserve the right to be wrong, right? Past returns are no guarantee for future, we all know that. Okay, so Nifty का चार्ट क्या कहता है? Nifty you see has had a beautiful rally. So and that rally has now got there's a bit of a pullback, right? So last 2 days actually have been quite severe for Nifty, and as per current charts 18,700 should be a significant resistance for Nifty, and on the lower side there is a good support coming at 18,200 levels and 18,000 levels. So I feel Nifty could trade between 18,000 levels to 18,700 levels for this week, while there are levels above and below that also. उसके नीचे और ऊपर भी levels हैं जो कि आप चार्ट पे देख सकते हैं. But my key thinking is Nifty for this week 18,700 to 17,800, right? And option data की बात करें तो हमने देखा कि option data में भी 18,000 पे बहुत अच्छा put writing है. That has increased recently
in spite of market falling, so which tells you that 18,000 is may not be broken. So काफी अच्छा सपोर्ट वहां पर हमको दिख रहा है. ऊपर की साइड जो है 18,400 पे काफी चैलेंज दिख रहा है. वेरी हाई ओपन इंटरेस्ट, और जो बड़ा है 265% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है in the last day only, yesterday only. So that tells you that ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. So 18,400 is the key resistance, और अगर वो पार कर जाता है तो 18,600 पे तो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है ये. That is the maximum open interest also. So ऊपर का मामला looks like a bit of a narrow range. We've already fallen, so but then we're unlikely to go up much, but also unlikely to fall down significantly. There's also a lot of FOMO in the market, fear of missing out. A lot of people have missed out this rally, so unlikely they'll allow it to go down too much. Buying should emerge. So far, for many weeks, market has been buy on dips rally. So this time it's a bigger dip, but I think people buying will come. Okay. Before I get into Bank Nifty, I just want to remind you that besides the YouTube, we also we have presence on other social media like Twitter and Instagram, right? It might be interesting, meaningful for you to go there also and subscribe, because जहाँ हम YouTube पे वीकली बात करते हैं, हम इंस्टा पे डेली क्या बात करते हैं. We have a series called Markets Today and Tomorrow, जहाँ हम डेली अराउंड मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट डेली इवनिंग में मार्केट को एनालाइज करते हैं. व्हाट हैपेंड टुडे, व्हाई इट हैपेंड, एंड we also have some projection for where can the markets be tomorrow, right? So that's a quick analysis, not as detailed as this one, but that helps the regular traders, right? So maybe you want to go there. The channel name is stockincome.in. Similarly, we are present on Twitter by the same name, and we also keep sending some useful inputs there. Besides market levels, we also talk about lot of micro learnings. So might be a good idea to visit. Okay. बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी हैज बीन द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू इंडाइसेस इन द लास्ट मेनी वीक्स, एंड इट्स बीन ग्रोइंग फास्ट. पीएसयू बैंक्स ने बहुत सपोर्ट किया. द ब्यूटीफुल रैली वी हैव हैड इन पीएसयू बैंक्स, ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड, एंड बैंक निफ्टी इज आल्सो टेकिंग अ बिट ऑफ ब्रेक इन लास्ट 2-3 days. So that makes it 44,200 as a key resistance level. उससे ऊपर जाना इस वीक के लिए मुश्किल लग रहा है. There is a support at 42,600, और अगर वो टूट गया तो 42,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. So I feel market could trade between this range 44,200 to 42,000 for this week. ऑप्शन डेटा को देखें तो ऑप्शन डेटा में भी 43,000 पे अच्छा सपोर्ट है, और 42,500 पे अच्छा सपोर्ट है. काफी पुट राइटिंग है, और वो पुट राइटिंग बड़ी है. ऑन द अपर साइड 44,000 विच इज क्लोज टू 44,200 जो वी सेड, काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस बड़ा है. सो अगेन ऑप्शन डेटा इज आल्सो सजेस्टिंग द मार्केट्स माइट फेस रेजिस्टेंस अराउंड 44,000 लेवल्स इन द कमिंग वीक. So that's a broader analysis, friends, for this week. I hope you find it meaningful. I hope you find it useful, right? Use it. There are different tools to use these things. This is just an input. इसको कैसे use करना है या नहीं करना है वो आप decide कर सकते हैं. There are many ways of doing it. But I must thank you for being with me, for liking the videos, for your comments, and do not forget to share with people, like-minded people who might benefit from this analysis. And if you haven't subscribed or you haven't pressed the bell icon, the notification ISO, you can do it right now. That helps us stay connected more regularly. Till we meet next, thank you so much. Bye bye and Jai Hind.